prosperous nations on the world map have not emerged out of some miracle. They've utilized the human capital and other resources effectively. This utilization created equal opportunities of growth and progress for the individuals and enterprises. A country like Pakistan, where 64% of its population consists of youth, is still a developing economy. This is a huge number of human capital, however underutilized for various reasons. One of the major reasons for youth unemployment is lack of competency-based skills. TVET Sector Support Programme was introduced in 2011 with the slogan of Skills for All. TVET Sector Support Programme has largely contributed towards the goal of skilled youth. Printing is the second largest industry after textile, which provides employment to more than 2 million people. So currently we are having 15,000 printing units all over the Pakistan और तकरीबन 4,000 तो सिर्फ सिंध के अंदर मौजूद हैं, जिसमें 3,500 कराची में। अगर हम देखें इस तरीके से कि हर प्रेस को सिर्फ एक बंदे की ज़रूरत है, तो इमीडिएटली हमें 15,000 स्किल वर्कफोर्स की ज़रूरत है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके लिए हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं। 2013 में हमने इसकी बुनियाद रखी थी, जब हमने एक अपनी तरफ से एक कोर्स डेवलप किया। 2018 में नेफ्टेक ने हमारे साथ मिलकर कोर्स डेवलप किया, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 क्वालिफ़िकेशंस हमारी डेवलप हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उन सबसे बढ़कर जो अचीवमेंट है कि लेवल 5 पाकिस्तान में पहली बार हमारी इंडस्ट्री में ही होने जा रहा है, और अब तक हमने तकरीबन 550 से ज़ायद बच्चों को ट्रेन किया है, और वो तकरीबन 100% के करीब बच्चे एम्प्लॉय भी हो चुके हैं। टीवीएट सेक्टर प्रोग्राम्स की मीटिंग में जाने से आपकी जो विज़न है, जो थॉट्स हैं, वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। हमारे मेन प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है, हर डेस्क एंड स्टोर्स एंड पीआर एंड ऑल दिस कि दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट ग्रूम्ड फॉर दैट। सेकेंडली सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो हमारी ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है, उसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं है। दे वर ऑलवेज डिपेंडेंट, दे नेवर थॉट कि हम खुद भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हम करते रहते थे इनके टीवेट के प्रोग्राम्स में, दे अप्रोच्ड अस कि हम इसका अगर प्रोग्राम बना लें एक ऑर्गेनाइज किस्म का, एंड दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। सो लैब्स बनी, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा हमें सपोर्ट किया और हमें समझाया। साथ साथ एक और भी था कि एम्प्लॉयमेंट लिंक भी उन्होंने हमें बताया कि आपको ये भी मिल जाएगा फ्रॉम नेफ्टेक, और वंस वी इस्टेब्लिश दैट, और कॉल सेंटर की ट्रेनिंग देंगे तो फिर ये सारा भी साथ ज्वाइन अप हो जाएगा। वी हैड 22 इन द फर्स्ट बैच, उसमें 3 लोगों ने तो सर्विसेज में चले गए, उसमें 2 वेबसाइट में गई और 1 सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो इस तरह के एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप जिनकी स्किल थी और हमने उसको स्ट्रेंथन किया, एंड नाउ दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस इंडिपेंडेंटली। जो स्टूडेंट्स 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट कर लेते थे, तो उनकी हमारे पास एक लिस्ट आ जाती थी, तो उनको हम यहाँ पे अपने साथ एक प्रोजेक्ट में इंगेज कर लेते थे। वो प्रोजेक्ट्स 2 मंथ्स का होता था, जिसमें वो ऑन साइट ट्रेनिंग भी लेते थे, हमारी जो टीम थी वो उनको समझाते भी थे। तकरीबन 25 to 30 स्टूडेंट्स पर बैच ये हमारे पास आते थे, जिसमें 10 से 15 जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम परमानेंटली भी हायर कर चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में 3-4 सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस, मेसनरी की भी इनमें इन्वॉल्वमेंट है, इवन इसमें वेल्डर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारे सेक्टर्स एक ही रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वॉल्व हैं। अगर हम इन सेक्टर्स को प्रॉपरली एजुकेट करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी आंदा चंद सालों में हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। TVET Sector Support Programme was launched under the guidelines of modernizing and managing the current TVET delivery model by upgrading and enabling the components like TVET bodies, policy making, and private sector engagement, with the academia in designing industry standard curricula and training methods. This intervention has so far successfully achieved major goals.
When the project started, we saw that there was very little engagement of the private sector, and therefore also the demands of the private sector in the training were not really met. So with the establishment of the National Vocational Qualification Framework, we had a strong engagement of the private sector together elaborate the right curricula for the students. The engagement of the private sector in a lot of different sectors we are working with is very relevant. We all know that in development cooperation we cannot work without the private sector. Therefore, GIZ engages the private sector in different initiatives. We have initiatives also, for example, in Egypt, where we work in the energy framework together with companies like Siemens and establish cooperation which is benefit to the organization, to the goals of development, and also for the private sector. So if you look at the global challenges which are described in the Sustainable Development Goals, they can only be achieved if we work together, and that means we work together with the academia, with the social society, but of course also private sector, private investment, private engagement plays a very vital role to achieve this SDGs. TVET Sector Support Programme has established an ecosystem which is connecting the dots to fulfill the needs of both employer and employee. A national employment exchange tool created by GIZ and NAFTTC, public-private partnership in different sectors, have bridged the gap between demand and supply in human resource market. This revolutionized TVET delivery model is all the way leading for the prosperity and well-being of the countrymen.